Admit. Namaskar. Swagatam. I would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, International Interdisciplinary Institute for Research, Education and Skill, and we all, from off the dais, on the dais, all dignitaries. Really, I salute your blessings, your cooperation, your guidance, mentorship, everything. Today is World Oral Health Day. That is very unique subject again. For Oral Health Day, we have invited our senior expert, Dr. Suryakiran Wagh ji, Dr. Ashok Patil, Dr. Manu Sharma. So, without wasting much time, I would like to request Professor Bishnu Prasad Sharma ji, former principal, Government Ayurvedic College, Guwahati, and President of Vishwa Ayurved Prasad, Assam, for his welcome address, and then. Okay, good evening. Namaskar to everybody. Respected Professor V.K. Agnihotri ji, respected Pawan Kumar Sharma ji, respected Jagadish Sir ji, eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, seminar is the important subject, best oral health care. Pawan Sharma ji organized due to today is World Oral Health Day. So best oral health care, it is most essential to keep our body healthy, or we have to maintain our oral hygiene. And those who are suffering from diabetes mellitus, it is more essential to maintain this oral hygiene. If oral hygiene is not in proper in diabetic person, then they may develop lots of complications and diseases. So we have a very, very good eminent speaker, Dr. Suryakiran P. Wagh. Next, Dr. Ashok Patil. Next, Dr. Manu Sharma. I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, and audience to this international webinar on best oral health care. And I declare that today's webinar is open. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much. I welcome Dr. Agnihotri ji, Dr. Jagdishwar ji, Dr. Avdish Pandey ji, Dr. Manu Sharma ji. Everybody has now joined. So I am now pleased to invite Dr. Suryakiran P. Wagh ji. He is Professor in HOD Kai Chikitsa, Yashwant Ayurved College, Postgraduate Training and Research Center, Kodoli, Maharashtra, PhD and Guide, member of National Council for Clinical Establishments, member of Core Committee, Ayurved Vyaspeeth. So without wasting much time, I would like to request Dr. Wagh for blessing as a motivational speech on today's topic. Welcome, sir. Namaste. Namaste, Agnihotri ji, Pawan Sharma ji, Vishnu Prasad ji, Jagdishwar ji, and all attendant. आज ओरल हेल्थ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओरल हेल्थ में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय जो है वो है रसन इंद्रिय, जिह्वा। ये एक ज्ञानेंद्रिय है। ये किस उद्देश्य से हमारे शरीर में है, ये अगर हम सोचे तो उसका मूल उद्देश्य जो है उससे हम भटक गए। ज्ञानेंद्रिय का मूल उद्देश्य जो है वो है हमारे शरीर में विष का सेवन ना हो, विष की हमें टेस्ट मालूम पड़ते ही वो हम थूक दे, इसलिए रसन इंद्रिय है। लेकिन
जू की जिह्वा से हमें टेस्ट का पता चलता है, और षड्रस जो दिए हुए हैं वो आहार तो षड्रस युक्त होना चाहिए, लेकिन जिह्वा को ज्यादा भाने वाले जो रस है वो है मधुर, आम्ल, कटु और लवण। इसके कारण इनका सेवन ज्यादा मात्रा में, उसमें भी मधुर रस का सेवन ज्यादा मात्रा में होता है। और इसका परिणाम जो है, अगर हम देखते हैं कि व्रण उत्पन्न करने वाले जो है रस, ये मधुर, आम्ल, कटु, लवण, ये रस है, ये व्रण उत्पन्न करने वाले हैं मुख में, तो इससे मुखपाक होता है। बाकी भी कृमि जैसे बाकी भी जो व्याधि है वो भी चलते हैं। और व्रण से बचाने वाले दो रस है, एक है तिक्त और कटु, इसका सेवन कम मात्रा में होता है, इससे भी मुखपाक होता है, जिह्वा में या मुख में छाले पड़ते हैं। तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमें जिह्वा जो दी है उसका हम सही उपयोग अगर करते हैं, सही प्रयोग करते हैं, और रस का पता चलने के बाद भी अगर हम तिक्त और कटु रस का सेवन करते हैं तो इन व्याधि से हम बच सकते हैं। मुखपाक व्याधि जो है उसमें अग्निमांद्य, सभी व्याधियों में जैसे है इसमें भी अग्निमांद्य आता ही है, लेकिन हम थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो दो तीन चीजें उसमें ज्यादा है उसके निदान में। एक तो है कि जब हम आटा लेते हैं गेहूं का, ज्वार का, तो वो छलनी से छान कर लेते हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, उसको एकांत हितकर कहते हैं। क्या है वो? अगर धान जो है, गेहूं या आटा, उसमें कार्बोहाइड्रेट अंदर है जो सफेद रंग के है, और जो लाल रंग का या दूसरा जो है रंग ऊपर का जो आवरण होता है, उसका कवर होता है, उसमें विटामिन है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ऊपर की विटामिन है। अगर हम छोटी से छोटी छलनी से अगर ये छान लेते हैं तो हम विटामिन को अलग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को अलग करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इससे भी अग्निमांद्य होता है और उससे मुखपाक जैसी व्याधि होती है। दूसरा कारण है इसमें चाय और शक्कर की अति मात्रा। चाय तो आया कैसे है, और उसका प्रचलन भी इतना ज्यादा है कि वो बंद करो कहने से भी बहुत पथ्य उसका बताने से भी बहुत मुश्किल होती है, और वो मानते भी कम है। लेकिन इन दोनों की मात्रा भी विटामिन बी की कमी करती है और वो अग्निमांद्य और बद्धकोष्ठता लाती है, और उससे भी मुखपाक होता है। दूसरी बात ये है कि हमें ये जो पचन की क्रिया है उसका सही मात्रा में आकलन सामान्य जनों में नहीं है। जैसे कि है स्वस्थ की परिभाषा में मल का सृष्ट होना, सृष्ट निकलना। किसी को भी अगर पूछते हैं कि आपकी मल प्रवृत्ति कैसी है तो वो बताते हैं कि ठीक से है, लेकिन ये सृष्ट मल जो है कि वो छूटना चाहिए आसानी से, ये नहीं होता। उनको मलावष्टंभ की परिभाषा मालूम नहीं होती, और खाने में भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का सही मात्रा में संतुलन नहीं होता है, और बाकी रसों का भी नहीं होता है, तो मलबद्धता होती है, ये बद्धकोष्ठता होती है उससे। और वो उनको पता भी नहीं चलता कि ये व्याधि है, इससे आगे चल के हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसमें मुखपाक में विरेचन जो लेना चाहिए, जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति ने भी अगर बद्धकोष्ठता है तो विरेचन लेना चाहिए, वो नहीं लेते, सृष्ट मल उनको पता नहीं चलता, इसलिए ये मुखपाक बढ़ता है। इसमें गोमूत्र हरित की बहुत अच्छा काम करती है विरेचन करने में, शुद्धि क्रिया में। और ये मुखपाक में अग्निमांद्य करने में कफ दोष का भी घटक इसमें कफ दोष काम करता है। ऐसा अगर हमें पता चलता है तो उसमें वमन जो है, निम्ब सारिवा, इसका क्वाथ आखंड देने से अगर हम वमन करते हैं तो वो भी मुखपाक में बहुत अच्छा काम करता है। लगाने के लिए शंख जैरिक और संजीरा और सुवर्ण गैरिक जो है वो लगाने में ये मुखपाक में बहुत अच्छा काम करता है।
रोपण तेल या इरी मेदादी तेल, इसका गार्गल या ये लगाने से भी मुखपाक अच्छी तरह से ठीक होता है। जो मुख में व्रण होते हैं, इसमें फिटकरी जल या त्रिफला क्वाथ का गार्गल ये भी बहुत काम आता है। महातिक्त घृत का सेवन अगर अभ्यंतर हम करते हैं तो वो भी मुखपाक में बहुत अच्छा काम करता है। मुखपाक में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, जो हमारे परंपरा से चलता आ रहा है, तो जाति पत्र पेड़ से निकाल के सीधा चबाते हैं, इसका भी बहुत अच्छा परिणाम व्रण रोपण में हमें दिखाई देता है। जात्यादि तेल या बाकी तो हमारे औषधि हमारी है ही, लेकिन ये जाति पत्र का पन्नों का चबाने से भी बहुत अच्छा काम होता है। ये षड्रस युक्त आहार ना लेने का दूसरा परिणाम जो होता है वो होता है कृमि का। ये और कृमि का भी पता नहीं चलता उनको, सामान्य जनों की, कि ये क्या हो रहा है। अगर खून की मात्रा कम होती है या बाकी परिणाम दिखते हैं तो उन्हें वैद्य को दिखाने के बाद पता चलता है कि ये कृमि है। आहार में छोटे बच्चों में चॉकलेट और बिस्किट, मैदे का प्रचलन, ये कृमि तो करता ही है, रस को भी दुष्ट करता है, और बाकी जो त्वचा के व्याधि है कुष्ठ के, वो भी बहुत मात्रा में निर्माण करता है। पुराने काल में एरंड स्नेह का देना, वो स्वस्थ हो, व्याधि युक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन हर महीने में या हर हफ्ते में भी जो दादी माँ होती थी वो 30 ml तक ये एरंड स्नेह हर एक को पिलाती थी। तो वो बंद हुआ है, इससे भी ये अन्नव स्रोतस के व्याधि बढ़ गए। वैसे तो निम्ब और विडंग ये कृमि में काम आने वाली औषधि हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्याधि जो ओरल कैविटी में जो आते हैं, छोटे छोटे व्याधि और बहुत बार होने वाले, फ्रीक्वेंटली जो होते हैं, उसमें एक है फेरिंजाइटिस और दूसरा है टॉन्सिलाइटिस। फेरिंजाइटिस देखते हैं तो उसमें भी क्या है कि गले का पोषण हो स्वर यंत्र का, इसके लिए जो काम करना है, जो उसका ख्याल रखना है, वो रखा नहीं जाता। क्योंकि अगर हमारे स्वर यंत्र पर तान है तो कंकोड़ का इस्तेमाल हमने करना चाहिए, वो किया नहीं जाता। यष्टि मधु का उपयोग हमने करना चाहिए, वो किया नहीं जाता। और इसकी वजह से अगर हम ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, ठंड में जाते हैं, ऑयली कोई खाते हैं, तो ये गला बैठने वाली व्याधि जो फेरिंजाइटिस है वो हो जाती है। और इन्फेक्शन से भी होती है, वायरल इन्फेक्शन और बाकी इन्फेक्शन। तो उसमें यष्टि मधु, वचा, कंकोड़, इसका क्वाथ, उससे गार्गल करने से इसमें आराम पड़ता है। टॉन्सिलाइटिस है या इसमें भी फेरिंजाइटिस में दूध और हल्दी का प्रयोग बहुत काम आता है। टॉन्सिलाइटिस को अगर हम हल्दी और शहद का प्रतिसारण लगाते हैं, त्रिफला क्वाथ का गार्गल करते हैं, गुडुचि नीम का गार्गल करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। ये जो व्याधि बताए हैं, जो दिखते तो ओरल कैविटी में है, लेकिन उनका संबंध प्राणव स्रोत से भी होता है। आम दिखता तो हमें इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता। शरीर की हमारी व्याधि प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनिटी जो है वो काम करती है। वो काम कब नहीं करती, जब हमारे अग्नि मंद हो जाता है हमारा, और आम की निर्मित होती है, और रस में जाके जब आम मिलता है, साम रस होता है, तभी हमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ते हैं। अग्नि की समस्या, अन्नव स्रोतस की समस्या, प्राणव स्रोतस की समस्या बच्चों में होती है। बच्चों में हमें स्किन डिसीजेस या रेस्पिरेटरी डिसीज, ब्रोंकियल अस्थमा जैसे पेडियाट्रिक्स में जो दिखता है, प्राणव स्रोतस की जो ये सभी विकृतियां दिखती है, अन्नव स्रोतस अग्निमांद्य की विकृतियां और त्वचा रोग जो है कुष्ठ, ये बच्चों में ज्यादा होने का एक कारण समझ में जो आता है, जन्म घुटी में भल्ला तक आता था। ये भल्ला तक जन्म घुटी से जब से निकला है, क्योंकि वो उसकी रिएक्शन आती है, इसका बेवजह डर ज्यादा बड़ा है,
इसके कारण वो जन्म घुटी से भल्ला तक निकला है। इसकी वजह से ये अग्निमांद्य की, प्राणवशोथस की, अन्नवशोथस की जो समस्या है वो बड़ी है, ऐसा लगता है। ओरल हेल्थ में एक जो समस्या आती है उसमें ब्लीडिंग गम्स की समस्या है, दांतों की समस्या है। तो ये गम्स की और दांतों की समस्या है, तो उसमें लोध्र, औदुंबर, वट, इसका निर्यास जो है, औदुंबर का विशेष करके निर्यास हिलने वाले दांतों को लगाने से वो टाइट होते हैं, और ये आम रीति से प्रयोग में लाया जाता है ग्रामीण इलाके में। कृमिदंत में लौंग का प्रयोग भी बहुत मात्रा में होता है। दंतमंजन की, दांतों का ख्याल रखने की जब बात आती है, तो अभी तो ज्यादा अगर जो आयुर्वेद के सिद्धांत के खिलाफ जो बातें हो रही है, जैसे कि पेस्ट का चलन, टूथपेस्ट का चलन बहुत बड़ा है। ये टूथपेस्ट आया कैसे है? ब्रश और पेस्ट लगाने के लिए बहुत ही आसानी से है, कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी दुकान में मिलता है। इसकी वजह से ये दंतमंजन के बजाय ये पेस्ट का चलन बढ़ा है। लेकिन पेस्ट जब हम सभी देखते हैं, अभी तो उसमें प्रयोग चल रहा है, उसमें नमक डाल रहे हैं, बाकी भी चीजें डाल रहे हैं, लेकिन पेस्ट, ज्यादातर पेस्ट जो है वो मीठी है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं और हम वात प्रकृति देखते हैं, तो उसमें दांतों का आवरण जो होता है बहुत ही पतला होता है, और ये दांतों का आवरण पतला होता है, उनके लिए ये मधुर रस की जो पेस्ट है, मीठी पेस्ट है, वो काम कर सकती है, क्योंकि आवरण उनका घिसता ज्यादा है। लेकिन जिनकी प्रकृति कफ की है, उनका ये आवरण बड़ा होता है, उसमें टार्टर जमता है, उसमें कफ भी संचित होता है। तो वो लोग अगर ये मीठी पेस्ट लगाते हैं तो कफ का बढ़ना क्रम प्राप्त है, और ये बढ़ने वाला कफ जो है दांतों की समस्या उनमें ज्यादा बढ़ाता है। तो उनके लिए मीठे रस की पेस्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनमें ये तिक्त रस वाला दातून ही चाहिए। उनमें नीम का दातून तो आयुर्वेद में बताया है, नीम का दातून पेड़ से निकालनी है, नीम की छोटा सा टुकड़ा, और वो दांतों से चबाकर उसका दातून करना है। अमेज़न पे भी और वो बिकने लगा है, तो हमने तो वो छोड़ दिया है। तो ये वात प्रकृति के हिसाब से जो दंतमंजन होना चाहिए वो प्रचलन नहीं रहा, इसके कारण ये कृमि दंत की समस्या बड़ी है, और ये मुख की समस्या भी बड़ी है। दूसरी बात है, ये पेस्ट लगाने का उद्देश्य जो है वो ही निकल गया है। वो क्या उद्देश्य था? तो ये दंतमंजन लगाना जो है, उसमें अग्नि और मर का प्राकृत गुना भी था, उसमें रस प्रसादन था, आम पाचन था, ये सब बातें पीछे चली गई है। और उससे मुख दुर्गंधि जो है वो कम करने के लिए पेस्ट में केमिकल्स जो डाले हैं, उसमें से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए मुख की दुर्गंधि जाती है, लेकिन जो नीम के दातून के फायदे हैं वो सभी चले गए हैं। दूसरी बात थी जीवा लेखन की। ये जीवा लेखन वाला मामला जो है वो, जैसे हमारे व्हीकल में स्पार्क प्लग काम करता है, हमारा रसनेंद्रिय अच्छी तरह से काम करे, हमें टेस्ट अच्छी तरह से मालूम हो, ये फीडबैक मैकेनिज्म है रस का। जो भी हम चीज खाते हैं उसका ये डाइजेस्टिव जूस कौन से और कैसे पैदा हो, इसके लिए सेंसिटिविटी ऑफ द टंग ये जो है ये जरूरी है, उसके लिए जीवा लेखन करना जरूरी है। वो अगर हम नहीं करते हैं तो जैसा स्पार्क प्लग पर कचरा जमने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, वैसे ही हमारा पूरा अन्नव स्रोतस बिगड़ जाता है। इसलिए ये जीवा लेखन भी बहुत जरूरी है, वो करना भी जरूरी है। ये ओरल हेल्थ में गंडूश और कवल, ये दोनों जो है वो भी बहुत काम की चीजें हैं, लेकिन वो भी प्रकृति के हिसाब से करना जरूरी है। अगर वात प्रकृति है तो तेल का कवल जरूरी है, और अगर कफ प्रकृति है या पित्त की प्रकृति है तो तिक्तरस या तिक्तरस से या दूसरे जो लवण रस है उससे गंडूश करना चाहिए, और वात प्रकृति है तो तेल से कवल करना चाहिए।
ये अगर नहीं करते हैं तो फिर ये ओरल हेल्थ की समस्या बढ़ना है। ये गंडूश बहुत ही काम आता है इसमें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हम मालूम भी नहीं है, तो त्रिफला गंडूश अगर हम करते हैं ओरल हेल्थ के लिए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर मुख में जाट है तो गर्म पानी से हम गार्गल करें, कपसंचिति है तो पानी में क्षार डाल के हम गार्गल कर सकते हैं। अगर मुख में व्रण है तो शहद में पानी डाल के हम उसका गार्गल कर सकते हैं। अगर हमें टेस्ट नहीं आती, आस्य वैरस्य है, तो गर्म पानी में नमक डाल के हम गार्गल कर सकते हैं। और अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसने तिल तेल का गार्गल ये करना चाहिए। तो ओरल हेल्थ में अभी जो डेंटिस्ट्री चल रही है, उनको जब तक ये प्रकृति का हिसाब समझ में नहीं आता है, तब तक वो ओरल हेल्थ के लिए ये दांतों के कृमि दंत से या डेंटल कैरीज से निपटने के लिए या मुख दुर्गंधी बैड ब्रेथ से समस्या से जूझने के लिए या ब्लीडिंग गम की समस्या से जूझने में वो आइडियल नहीं हो सकते जब तक आयुर्वेद की इन सिद्धांतों का वो प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं लेंगे। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने कुछ भी आशीर्वाद के बिना नहीं छोड़ा। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। धन्यवाद। आपने पूरी पूरी ओरल हेल्थ केयर की कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू बहुत अच्छे सरल और सार गर्भित शब्दों में हम लोगों को आशीर्वचन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अग्निहोत्री सर। नमस्कार, धन्यवाद शर्मा जी। हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे और प्रोफेसर हमारे सूर्यकिरण जी ने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में आज के टॉपिक पर अपनी विचार प्रस्तुति दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखी उन्होंने, इसके हेतुओं के तहत ये बताने का पहले प्रयास किया कि जो मधुमेही है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको विशेष रूप से मुख गुहा का और दांतों का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो करते रहना चाहिए और उसकी हेल्थ ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। विशेष रूप से मुख व्रण के संबंध में उन्होंने बताया कि ये मधुर रस के अधिक सेवन करने से होते हैं, इसलिए तिक्त और कषाय रस के बारे में चर्चा बताई और समस्त हेतुओं को, समस्त इटियोलॉजी के बारे में अच्छे से प्रकाश डाला और महत्व दिया कि आज किस तरीके से जनघुटी जो विलुप्त होती जा रही है और दंतवन का प्रयोग समाप्त हो गया है, दंत चूर्ण का प्रयोग खत्म होता जा रहा है। टूथब्रश और टूथपेस्ट के इस्तेमाल से वो चीज, वो रस की प्राप्ति उस जीवा को नहीं हो पा रही है जिसको वो स्वीकार करे या नकारे। लेकिन फिर भी कवल और गंडूस धारण के बल पर बहुत कुछ मुख के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो दंत पवन की चर्चा की, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको हम लोग भी बताते थे, इट इज 3 in 1। ये अपने में दंत माने दंत पवन जो है अपने में दंत टूथब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है और टंग क्लीनर भी है। इन तीनों ही रूप में हम एक अकेली दंत पवन का इस्तेमाल कर लेते थे और सबसे बड़ी ये संक्रमण रहित होती थी, जो इसकी स्टेटस दिया गया है ना, आपोषिताग्रम की बात कही गई है। और देखा है 12 अंगुल आयतनम, तो 12 अंगुल प्रयोग करने वाले के 12 अंगुल के अनुसार दंत पवन का प्रयोग करते हैं, उससे निश्चित रूप से और प्रतिदिन के आधार पर इसके को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती कि टूथब्रश को संभाल के रखना है, इसको 4% पोटेशियम पैग्नेट के पाउडर पानी में रख के रखना है, वो सब कुछ भी नहीं। डेली फ्रेश पीस लेना है और उसको योग करना है। तो बहुत ही अच्छा सर का प्रेजेंटेशन रहा, अपने पद और अपनी ज्ञान के अनुसार उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन शर्मा जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छी तरह इसका समायोजन किया। मैं अब डॉक्टर अशोक पाटिल जी को बुलाना चाहता हूं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य वृत्त, KLE BMK आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेलगावी। वेलकम, वेलकम डॉक्टर अशोक पाटिल। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Dr. Ashok Patil, are we audible to you? अशोक पाटिल जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? Kindly unmute yourself.
टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नहीं मैं अभी देखता हूं। Are we audible to you, Dr. Ashok Patil ji? नहीं, ज्वाइन तो किया हुआ उन्होंने, बस म्यूट आ रहा है उनका माइक। नहीं नहीं, यहाँ से हमारे यहाँ से कोई रोक नहीं है सर। हेलो, देखिए ना आप, फिर करिए ना एक बार। म्यूट म्यूट आ रहा है इनका। हेलो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है सर। वी आर आस्किंग टू अनम्यूट। हाँ वो लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि होस्ट इज नॉट अलाउइंग टू अनम्यूट, ऐसा कुछ लिखा है। आप अपनी तरफ से भी unmute कर- मैं हाँ। कंटिन्यूअसली उनको कर रहा हूँ। तो नंबर हो तो घंटी मारिए उनको, वो भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैं नहीं, हम तो यहाँ से उल्टा आस्क टू अनम्यूट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो कहीं कुछ है, कुछ स्लो है, सिग्नल की प्रॉब्लम। हाँ, मैं नहीं जानता कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अपन ने किसी को भी बोलने से नहीं रोका है, आप तो जानते हैं। आप म्यूट हैं। हाँ, इनको ना एक बार ना म्यूट करके अनम्यूट कर दीजिए, शायद नहीं, आ वो जाए। म्यूट ही है तो हम म्यूट कैसे कर सकते हैं सर? हाँ, उन्होंने कुछ मिनट पहले लिखा था कि म्यूट करने के लिए, या वो एक बार मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन करें। मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ, देखिए उससे कुछ मूवमेंट हो जाएगा। पाटिल जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम लिख रहे हैं अशोक पटेल टू एवरीवन। हाँ पाटिल जी, मैं आपको को होस्ट बना चुका हूँ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नाउ, यू आर को होस्ट। You can unmute anybody now. Please unmute yourself. वो शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जब तक वो जुड़ रहे हैं, यस, जुड़े। यस, वेलकम अगेन। यस सर। काइंडली अनम्यूट, आपकी ऑडियो ज्वाइन नहीं है। यस, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नाउ आई वांट टू शेयर वन पीपीटी सर. I will be sharing यस, it यू now. कैन। यस, यू कैन। Yes sir, wait sir, just a minute. Screen कर दो, नहीं तो screen कर दो, screen पे better screen. हेलो सर. यस, स्क्रीन विजिबल है क्या सर मेरा मोबाइल का? नहीं तो नहीं है. नहीं। नॉट येट। ओके, डॉक्यूमेंट से देखता हूँ.
अशोक जी आप दिख रहे हैं। अच्छा सर, फाइल का नाम क्या था? ओरल हेल्थ इन आयुर्वेदा। Share screen, then share. Share again. आज डोमा जी के स्पीकर से हैकरों जैसी आवाज आ रही थी। अच्छा, मैंने डर के मारे बंद हैदराबाद कर में वहां पर इसमें उसका नमाज वमाज का टाइम हो रहा होगा ना, उसकी आ रही है आवाज। अजान की आवाज आ रही होगी। डर लगता है सर आजकल। Is there any problem, Dr. Patil? Kindly unmute your. फिर म्यूट हो गया। नहीं, आप unmuted है। ये unmute. शेयर डॉक्यूमेंट। क्या है? ओरल हेल्थ है ना, 18 मार्च का ही दिखा रहा है। हाँ ओरल हेल्थ सर, क्या अपडेट? उधर पीपीटी ऑन करो, नहीं तो मैं यही बोलता हूँ, ऐसा ही बोल लेता हूँ। उधर पीपीटी ऑन करो, ऐसा ही बोल लेता हूँ। Namaste everyone. Sir, am I audible and visible? Yeah, visual and audible both. Yes sir, thank you. Don't be spectacle for your PPT. You come with your own thought. Yes sir. Now it is some technical issues, I couldn't able to share the PPT. Anyhow, matter is there. I once again thank all the organizers and the committee members for inviting me as a resource person to speak few ideas, few thoughts about this oral health. As in my PhD study is also assessment of oral health of an identified village population, and assessment after assessing that, teaching them regarding the Ayurveda oral health measures and seeing the effect, how much the oral health has improved in them. So this was the research study which I conducted during my PhD thesis work, where I could able to trace 1,500 village population of 2-3 selected villages, where I could able to observe that how much amount of the oral health measures which are explained in the Ayurveda are followed as per present era, and what is the impact of those practices. So this I could able to measure, where I have measured the oral health index by WHO's criteria, where some criteria is there. What is the oral health index of the person? It can be assessed. So most of the people, after assessment, it has come through the below average oral health status of that village population. The reason behind is the consumption of high amount of this betel leaf chewing and pan and etc. The habits what they are following. Along with that, the poor oral hygienic measures what they are following.
That means they are simply cleaning the oral cavity with the warm water, sometime with the cold water, and using the locally available tooth powders or some charcoal powders, and then washing it. This is the oral health condition. And as the people start suffering with this decay of a tooth and other oral disorders, as a painkillers, they started consuming the tobacco. As soon as they started consuming the tobacco or just putting the tobacco in the decayed tooth, then suddenly, due to the effect of narcotic effect of that drug, they used to forget the pain, and that has become a habit for those people. And that is how the tobacco chewing or the tobacco habit of tobacco has adapted to the community. Rather than going for the doctor, they started their own medicine as a tobacco. So most of the village population, either they chew the betel nut and most oftenly and along with the tobacco, and thereby not treating the actual cause, it has started deterioration and leading to the bad impact and the bad prognosis of oral health. So in this discussion, I want to share my ideology regarding the awareness of the common awareness in the common people regarding Ayurveda oral health hygienic measures. So that is much needed for the common people, where as Ayurveda teachers, we need to be the pioneers in propagating the basic life science knowledge to the common people, so that these oral health measures can be implemented in them amicably, so that they can accept it very easily. So the thing is, integrated approach is very much required, as the Ayurveda also suggested some 65 varieties of oral diseases, so that can arise like 8 on the lips, 15 on the alveolar margin, 8 in the connection with the teeth, 5 on the tongue, 9 on the palate. So like that, varieties of oral diseases they have mentioned. The root cause, and as well as along with the etiology, they have mentioned the treatment also, like oral cleansing, extraction, excision, this surgical procedures also they have mentioned, along with the treatment of orofacial diseases, and some therapeutic procedures to the prevention and maintenance of oral health. In Ayurveda, we are very fortunate that the vast explanation is there. Mukharoga Pratishedopaya, complete Pratishedopayas are mentioned. They include these Dantadavana, Jivanirlekana, Kavala, Gandusha, Achamana, and Ushapana. All these complete set of procedures are there, which can be comes under these oral health measures. So we have implemented what I have taught them. The village population is the set of modules I have prepared and taught them for the period of 1 month, so that they could able to practice these measures. I just want to share what and all the things I have shared with them. First one is regarding Brahmi Muhurta Jagarana, 96 minutes before the sunrise of the day. Usually they are, most of them are the field workers, only agriculture and field workers. So they used to practice it. Next one, Ushapana, what the classics they have mentioned, like previous night at least 10 to 12 hours before waking up, at least 250 ml to 500 ml of water. So that is to be taken in the early morning. Next, Mukha Prakshalana by the lukewarm water or else normal temperatured water, that is to be taken. Next, followed by Dantadavana. I have asked them to go for, as per the classics, that by usage of a Twix, or else simply go for the modern available the toothpaste, which are having most of the drugs which are mentioned in the classics. So these can also be preferred by using the appropriate brushing techniques. Appropriate brushes are to be selected. Then Jiva Nirlekana, I asked them to go for the, actually in the classics they have mentioned 10 finger in length flexible foil, twigs itself are to be used. But as the sadhanas are available now, equipments are available, at least by the copper
the Juha Nirlekana twig, that tongue scraper can be used. This is how we taught to the village population, rather than going for this fiber scrapers, or rather than going for these plastic scrapers, let them use these copper scrapers. And even the scraping method is also taught to them, not too sharply, not too deeply, not with too pressure. The scraping should not be done, so that the outer coating of the tooth, on the tongue should be removed. This is how the village population is taught. Next, followed with the Kavala and Gandusha. What the classics they have mentioned, various dravyas are mentioned for the maintenance of this oral health. But in the village, by the available sources only, available resources only, the Kavala and Gandusha can be practiced with ease, very ease. For example, let them use the simple Trifala Kwata Churna, let them do the Trifala Kashaya. We have distributed the powder, Trifala Kwata powders. Next, or else simple lukewarm water, or else Dugdha Gandusha. Like this, some sort of the Kavala and Gandusha are taught. So by the convenience of the time, let them practice this. They have started practicing this Kavala and Gandusha. And next, this instead of using the charcoal powder or simply market available the cheapest tooth powders, we have taught them to prepare the tooth powder by available sources like the musta, trifala, along with the honey and oil and water in each one of the other for the purpose of gargling respectively. So the Kavala and Gandusha, and by using the basic, the oral health protecting drugs, the powder preparation is also taught to them. This is how the village population is taught in concern with the oral health. Now let us see the mode of action, how these measures, different measures are going to act in preventing the upcoming oral diseases, and as well as some sort of curative action also going to take place. For example, Danta Dhavana, what they have mentioned in the classics, the drugs used are the neem, this Vatasana, Arka Kedira Karanja, Karavira, Sarja, Remeda, Apamarga. So these are all the have the hypertrophic gums and are asked to use chewing sticks. The Pitta dosha, even the doshic predominance, by selecting the doshic predominance of the persons, by assessment of dosha predominant of the persons, we can ask them to go for different twigs also, the different drugs also. So the drug selection also plays an important role. So they act by combating the doshas, prakupita doshas in the oral cavity. The other herbal practices, what I observed is the usage of mango leaves also. So in southern part of India, the mango leaf is widely used for cleansing the teeth. Mango leaf is washed in the midrib, washed and the midrib is removed. Leaf is then folded lengthwise with a glossy surface facing each other. It is rolled into cylindrical pack. One end of this pack is bitten off 2 to 3 millimeter to create a raw surface, which is rubbed on the teeth. Pack is held between the thumb and index finger. At the end, the midrib was first removed, is used as a tongue cleaner. So when we analyze this mango leaf, the mangiferin is a compound present in the mango as a significant antibacterial activity against certain strains of this pneumococci, streptococci, staphylococci, and lactobacillus organisms. So this is also a scientifically proven practice, but it is to be standardized now. Next, the other herbal practices, what I could observe is the miswak. Miswak, teeth cleansing twig made up of a twig of Salvadora persica tree, known as the arak tree or the pilu tree. The features in Islamic hygiene jurisprudence, they have mentioned it. It is predominant in the Muslim dominated areas. So this is also one of the herbal practice. Now the meswak toothpaste is also available. So we have asked them to go for such type of a toothpaste. Selection of a toothpaste is to be intelligently done, so that most of the drugs are to be incorporated in that toothpaste.
So chewing on these stems, these mango leaves or the meswak stems, believed to cause the attrition and leveling of biting surfaces, facilitate salivary secretions. When we see the analysis of these mode of action, when we analyze it, possibly helps in plague control. Some stems have an antibacterial action also. So present day research have shown that all these chewing sticks describes in the ancient Ayurveda texts have medicinal and even the anti-carcinogenic properties also now we could able to find. Coming to the Jivhani Lekana, it is ideal to use the silver, copper or stainless steel for the scraping of the tongue to remove the bad odor, that is halitosis, and it definitely going to improve the sense of a taste, stimulates the secretion of digestive enzymes. It actually stimulates the reflex points of the tongues. Regular use removes the millions of bacterial growth, which is repeatedly growing due to the moisture in the oral cavity. Clinical evidence shows that the use of tongue scraper on a regular basis has significant improvement in eliminating the anaerobic bacteria and decreases the bad odor. So this regimen is to be propagated. Most of the village population, what we could observe is they forget the tongue scraping simply by putting the thumb and by the 2 fingers only they used to scrape the tongue, but where the proper cleaning was not done. That's what the usage of the twigs or else the usage of a scraper is advised. Next, coming to the Kavala and Gandusha, very commonly available drugs they have mentioned in the classics. By those drugs, these Kavala and Gandusha is to be done. Whereas in the scientific way also, we could able to justify the things that the oral mucosa, when the drug absorption is very potential, when the drug is kept for a longer time in the oral mucosa with the pressure, so that the components of the drugs will directly enter into the blood. So with that concept, this Kavala and Gandusha are mentioned, whereas the Sthanika, the local application of the drug is very much effective rather than the oral intake. So that can also be proved here. And recently, since from 20 years, the oil pulling therapy is gaining a popularity. This therapy done using the oil like sesame oil, sunflower oils, even the Ayurveda Shastra also mentioned this Taila Gandusha, so that can be popularized. You know already the procedure of SOP of this Kavala and Gandusha. So definitely the oil pulling therapy is very effective against the plaque-induced gingivitis, both in the clinical and as well as the microbial assessment. Many of the PG dissertations works have been done, research works have been done regarding the assessment of improvement in this, how much amount it reduces the microbial quantity, microbial growth, so that effectiveness is calculated. Ayurveda advises this oil gargling to purify the entire system, as it holds that each section of the tongue is connected to the different organ, such as the kidney, lungs, liver, and all the other organs. So the gargling plays an important role. This, hence the Kavala and Gandusha, this effect can be understood very easily. So many research works are going on in post-graduation studies of Ayurveda related with these oral hygienic measures. The combined effect and as well as the individual effects are also going on. And now one more therapy is the tissue regeneration therapy. A well-known herb like Amla, Phyllanthus amblica, is considered as the general rebuilder of oral health. Amla works well as a mouth rinse as a decoction. 1 or 2 grams per day can be taken orally in the form of a capsule for a longer term benefit to the teeth and as well as the gums. So the Amla usage can be popularized, and this is to be advocated to the people, common people. Amla supports the healing and development of connective tissue when it is taken internally. So as a tissue regeneration therapy, this Amla can be advocated.
Next, regular use of bilberry and hawthorn berry fruits stabilize the collagen and strengthen the gum tissue. These fruits are identified that these are going to strengthen the gum tissue. And the licorice root promotes the anti-cavity action. These are the findings. Reduces the plaque and has an antibacterial effect. Herbs like this twak, cinnamon bark, haridra, turmeric are taken internally to strengthen the asti dhatu. For example, all these skeleton and joints have proven to be good for long term of health of this asti and as well as this tooth also. So mode of action is okay, and antibacterial activity of some plants, antibacterial activity of this Vata, Asana, Arka, Karanja, Karavira, Apamarga, these are also justified. The Azad Recta Indica mouthwash is reported to inhibit the growth of the mutants and carious lesions. In vitro studies indicate that the many Asian botanical formulae, including their individual herbal compounds and chemical constituents, exhibit the antibacterial, antifungal properties, which may significantly delay the development of plaques, calculus, and caries, and thereby the further deformity can be, further complications can be avoided, and hence these the techniques, this herbal tooth powder and as well as the herbal paste, usage of this herbal paste rather than going for the tooth whitening agents, shining agents, softening agents, the amalgamation of all these things what we are getting in the toothpaste, these are to be avoided. As such, natural available with the naturally available sources, even though they are less shiny, less whiter, but the actual sources are to be selected where the intelligence of the physician and intelligence of a human being is the select appropriate toothpastes in the market is much more needed as of now. So various plants and natural products have been used for their pharmacological applications like anti-ulcerogenic, wound healing, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant properties have justified by various research studies. So what I want to conclude is most of the oral diseases are caused due to the in the microorganisms, most commonly to the bacterial infections. And the antibacterial activity of the medicinal plants are due to the presence of potential bioactive compounds, which helps to reduce the bacterial load in the oral cavity and thus the prevention of formation of a plaque, dental caries and ulcers in the oral cavity. And this use of all these plants which are mentioned in the oral health and hygiene have a long history in the different parts of the world, not only in Ayurveda. Many other systems have also advocated the use of these herbs. Therefore, this profound knowledge is likely to vanish soon as many of these practices are not conveyed to the public, general public. So we, the propagators, are having the responsibility to convey the knowledge so that the people can adopt these the herbal medicines into their practice, routine practice in the rural areas especially. And globally, when we think the countries which are having a history of traditional medicine should support and integrate traditional medicines into the national health systems along with the combination with the national health policy. And as the research studies are going here, scientific validation of this Ayurveda dental health practices given above could justify their incorporation into modern dental care. Publicity of these techniques using the appropriate media would definitely going to benefit the general population by giving more confidence in the ancient practices, thus preventing tooth decay and tooth loss. So the intention is the habits of these forefathers. That means since from Brahmi Muhurta Jagarana up to Dinacharya, Madhyanacharya, Ratricharya, these basic concepts are to be converted into the amicable way without deviating into the concepts what the classics they have mentioned, and these are to be propagated to the common people. What nowadays trend is
if something is mentioned in the classics, we simply think that it is not possible today. But the thing is, without deviating from the concept, let us take the concept and by available circumstances, let us make it amicable way, in the practice way for the common people. This is the concern. And this is all about the gist of the research works which are going in post-graduation studies in Ayurveda institutions regarding oral health. Both the Swastarutta department, Shalake departments, and the Dantaroga specialty interested students are taking keen interest in developing a very good tooth powders, toothpastes, so that the propagation of these ancient principles are promoted nowadays, and it is very happy to know all these developments in the present era. With this brief note, I conveyed a few my thoughts with you people. Dhanyavad, sir. Excellent, excellent, Dr. Ashok Patil. Very nicely, without presentation also, you have completed everything regarding oral health care. Excellent. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Very nice, very nice. That's why I am requesting every speaker to send the PPT in advance to me to avoid these technical glitches that is there. So I would like to request now Dr. Manu Sharma ji. Welcome, Dr. Manu ji, professor in Jammu Institute of Ayurvedic Research. Thank you, sir. Welcome, welcome. Thank you, sir. Namaskar to all. Thank you, sir. आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया. सर मैं स्लाइड उस दिन की जूम बॉम्बिंग के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं. नहीं सर, कोई बात नहीं, ये कभी भी किसी के साथ ऐसे कोई बात नहीं. धन्यवाद. वेलकम. थैंक यू सर. सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर. Shall I start? So today's topic is oral health care. So oral health care is essential to promoting overall health. So WHO expanded the definition of health in 1948. So this has resulted in the paradigm shift of health and disease from a medical model to bio-psychosocial model. So oral health too denotes not merely the absence of disease, but the general well-being, so that the person can perform functions like eating, talking, smiling, and also contribute creativity to the society. The next, it also encompasses a range of diseases and conditions that includes dental caries, periodontal diseases, tooth loss, oral caries, orodental trauma, factors, that is use of tobacco और अल्कोहल कंजप्शंस और अनहेल्दी डाइट, जैसे कि आजकल हम मैक्सिमम ये हो चुका है प्रचलन की जंक फूड की हम लेते हैं, यहाँ ज्यादा स्वीट्स, यहाँ ज्यादा कुकीज, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो ये चीजें जो हैं हमारी डेली डेज में हम जो यूज कर रहे हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी ओरल हेल्थ को हैम्पर करती जा रही है. एंड देन लास्ट इज दैट इज हाई इन फ्री शुगर्स. Then there is one thing is that what is the connection between oral health and the overall health?
point to our digestive and respiratory tracts. Some of the bacteria they can cause diseases like diabetic mellitus is linked with development and progression of periodontitis, or high consumption of sugar, which leads to diabetes, obesity, and these dental caries. So, without oral hygiene, it may lead to oral infections, that is tooth decay, gum diseases, or decongestants, antihistamine, painkillers. Regular use of these drugs may cause dental caries. Then, in Ayurveda, for the treatment of these diseases, Ayurveda advocates all procedures such as oral cleansing, extraction, and excision. So, Ayurveda emphasizes upon the maintenance and promotion of positive health, which is its primary objective, whereas cure of disease is only secondary. Now, in Dincharya, there are various procedures for maintaining oral hygiene are well explained in our texts. That is Dantadavan, Pratisaran, Jivan Nilekhan, Gandush, and Kaval. Now, what is brushing teeth? So, brushing teeth means that it helps to remove dental plaques, tartar from teeth to prevent cavities, gingivitis, and gum disease. But a soft brush can be made by biting or chewing the tip of fat stem of medicinal plants. जो हम मैक्सिमम जो पहले हम किया करते थे, जैसे दातुन हम करते थे, तो हम फ्रेशली उसी स्टेम को लेते थे और उसको हम चबाया करते थे, जिससे हमारे उसके ब्रिस्टल जो है एक तरह से टीथ की एक रेगुलर एक्सरसाइज भी हमारी होती थी और उसकी सरफेसेस भी एक लेवल तक आ जाती, दैट इज causes attrition of biting surfaces which get leveled down. Then there are various plants recommended, that is Ark, Niagrod, Khadir, Karanj, Arjun, Vijay-Sar, Karvira, and Irimida. But they are these sticks should be kashai or katu or tikta rasa in nature. Because it elevates cough dosha and also helps to clear the viscera mucus secretions in the mouth. Then there are some plants which are not useful for our brushing, that is Shleshmantar, Bibitar, Nirgundi, Shigru, Pipli, Shalmali, and Palash. And there are some contradictions for Dantadavan. Some, that is, there are some facial paralysis or mouth ulcers, some heart diseases. There are some eye and ENT disorders. Then there are benefits of the regular brushing or Dantadavan. That is, you will get rid from bad odor of mouth. Appreciate the taste of food in better way. मतलब हमें रसों का ज्ञान अच्छी तरह से होता है, जिह्वा इंद्रिय से हमें अच्छी तरह से रस का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम प्रॉपर्ली ब्रशिंग करना स्टार्ट करें. So there are some techniques, that is your proper brushing takes at least 2 minutes. Generally हम कोशिश करते हैं हम कि सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम ब्रश करके फास्टली ब्रश करते हैं, हम छोड़ देते हैं. But right way is to take at least 2 minutes for brushing. Use just gently strokes. Make at least 45-degree angle between your brush and tooth surface. Clean the outer, firstly clean the upper teeth surfaces, then the lower teeth. Then clean your chewing surfaces. Then after every 3-4 months, you should replace your toothbrush. And one of the more important thing, कि हमें अपने ब्रश के लिए, दैट इज स्टोरेज प्रॉब्लम, कि हमें इसको कैसे रखें. दैट इज कीप योर ऑलवेज टूथ ब्रश इन ए अपराइट पोजीशन. कि मोस्टली हम रख देते हैं कि अपने वॉशरूम्स में या जस्ट नीचे रख देते हैं. दैट इज हम वेलकम कर रहे हैं बैक्टीरिया को कि वो वहां पर आपके ब्रश पे आ सके. तो मैक्सिमम है कि आप स्टोर, यू शुड स्टोर फॉर फैमिली टूथ ब्रशेस
should not be placed too close to the sinks, toilets. तो कोशिश हो कि हम किसी कैबिनेट, क्लोज कैबिनेट में रख सके ताकि कम से कम जो बैक्टीरिया कंटामिनेशन ना हो पाए वहां पे इस टूथ ब्रशेस के ऊपर. Then tooth powder rubbing. So one can use the powder of trifla or trijatak with honey or an sandal salt. Then massaging the gum daily with this trifla mixed with tela, which maintains teeth in healthy state. Then cleaning the tongue. Then the tongue से जीवन related. That one should use a thin plate of the bad odor from mouth, cures edema, increases taste perception. So individuals always, people also always perform tongue scraping every day. So this will not only clean your mouth but also stimulates your digestive tract and also improves your digestive fire. Then last is this gargling and oil pulling. So I think so it is important to gargle the mouth after every meal, after eating any food or after every brushing your teeth. One should use this cold or hot water for gargling. It imparts light and freshness in the mouth, and it can be used used to clean the oral cavity in those cases where brushing is contraindicated, like is mouth ulcers, fever, indigestion, or those who have the tendency to vomit. And last is this is your oral health plans. So there are oral health plans. One is understand. You should talk to your with your dentist or your specialist one about any special condition in your mouth or anywhere in which your medical conditions affects your teeth, like if you have taken some cancer treatment or in pregnant condition or heart disease which impacts on your oral health, so it is necessary to consult your doctor. Then second is develop, then follow, then a daily health routine. So people with special conditions, including this pregnancy and diabetes, may require some additional instructions, perhaps treatment to keep their mouth healthy. Then the third one is use fluoride or medicated toothpaste. So these fluoride strengthen this developing teeth in children and prevent tooth decay in both children and adults. So normally the fluoride level in tap water may not high enough without any supplementation. So we should contact our water utility worker to determine the level of the areas. Then fourth one is brush, floss and rinse. That is brush your teeth for 2 minutes at least twice a day and floss at least once a day. Then eat. Fifth one is eat a balanced diet and limit snacking. Matlab, healthy diet we should take. Snacking, that is fried foods, junk food, sugar and excess of sugar intake like cookies, cakes, pan, ice creams. So these food basically produces the most acids in the mouth, which begin the decay process. So if we do snacks, then we should brush our teeth afterwards. Then quit tobacco products. If a person is used to take tobacco, then we should encourage him to quit tobacco products because it increases the risk of oral cancers, cancer of larynx, pharynx, esophagus, gum diseases, bad odor, or tooth discoloration. Then last is examine your mouth regularly.
That is, you should become familiar with the appearance of your mouth, of your own mouth and teeth through frequent examination. This way, you will be able to catch any changes at any early stage. Like maximum, जैसे हम सुबह ब्रश वगैरह करते हैं तो हमें अपने टीथ को चेक, अपने माउथ को जरूर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई स्पॉट तो नहीं दिख रहा, कहीं कट तो नहीं लग रहा, या हमारे कुछ टीथ बार बार बकल कैविटी को बटन मिकोसा को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ कैसा है, रूफ कैसा है माउथ का। तो हमें ये देखना, अगर हमें कुछ भी इसमें चेंजेस लगते हैं तो वी शुड contact our nearby dentist or nearby your doctor. Thank you. Thank you. Thank you very much, madam. Okay, thank you. Very nicely explained. Very nicely explained. Thank you. Thank you. Thank you. Today's webinar is really fruitful and it is beneficial for the public also. Agnihotri sir. थैंक यू शर्मा जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु शर्मा के प्रेजेंटेशन पे बात करूं। बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया और स्पेशली कुछ चीजें इन्होंने और अंडरलाइन की कि ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ, बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया। हमें मैडम दोनों चाहिए, ओरल हेल्थ भी चाहिए और ओवरऑल हेल्थ भी चाहिए, और दोनों एक दूसरे से समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी होगी तो निश्चित रूप से ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि वही हमारे पास मेस्टिकेशन का साधन है, वही हमारे पास चबा के निगल के पेट में पहुंचाना, जिससे हमारी सारी आदतें बनेंगी और स्वस्थ हो गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने भी और इससे पहले डॉक्टर पाटिल ने जो बताया था कि हम सब जानते हैं कि हमारे ओरल कैविटी में 90 टाइप्स के अनपैथोजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं, और जो मीडिया चेंज होने के साथ ही साथ एकदम से, चाहे वो जिंजिवाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो या टॉन्सिलाइटिस हो, बन जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाए, और विद द हेल्प ऑफ द सच प्रिपरेशंस व्हिच आर हैविंग द मींस एल्कलाइन नेचर, क्योंकि एसिडिक फॉर्म में ही बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने जो चीजें बतलाई, स्पेशली कि टीथ पर मसाज की बात बतलाई, जो पाउडर का यूज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द प्रॉपर मसाज ओवर द टीथ एंड द सरफेस, ये तो एक चीज आपने और बताई, रबिंग और मसाजिंग ओवर द टूथ एंड ओवर द सरफेस, ये दोनों ही पॉइंट जो है वो काम करेंगे। और इससे एक और बढ़िया फायदा है, जितना अच्छा टीथ पे मसाज करते, पुराने जमाने में जो लोग खाना खाने के बाद कुल्ला करते थे तो उंगली से, मिडिल फिंगर से स्पेशली पूरे डेंचर पर फिराते थे, उससे प्रॉपर रिलीज ऑफ एंजाइम्स होता था, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता था। और खाना खाने से पहले जो मुंह हाथ धो के कुल्ला करके जब खाना खाना शुरू करते थे, उससे जो स्टिमुलेशन मिलता था ओरल कैविटी में डेंचर पर, उससे प्रॉपर टंग भी स्टिमुलेट होती थी और प्रॉपर सलाइवेशन होता था। तो सलाइवा में प्रेजेंट जो हमारा टाइलिन एंजाइम है, उसकी बदौलत खाने का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता था। सो इट इज इन ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कवर कर लेता हूँ दूसरों को भी, हमारे पाटिल साहब का भी, जैसा कि अपेक्षित था उनसे वैसा उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की और मोरबो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहते के प्रोफेसर हैं। तो एक और भी बात है, उन्होंने केवल अपनी बात केवल टेक्स्ट बेस नहीं कही, उन्होंने बात अपनी एक्सपेरिमेंट बेस और उन्होंने मॉड्यूल बना के और डाटा बेस बताई। मैंने पीएचडी वर्क उन्होंने जो 500 पेशेंट पर, विलेजर्स पर, जो डिफरेंट ओरल कैविटी से जुड़े हुए जो निर्देश हमारे यहाँ बतलाए गए हैं दिनचर्या में, उनका पालन कराया। और भी अच्छा होता है वो 25-25 का ग्रुप लेके एक कर्म, मतलब किसी से दंत धावन का करा लेते, किसी से गंडूस से करा लेते या कवल का कराते, तो शायद और उनको नर्सरी में माने वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन उनको मिलती। बट एक पॉइंट में समझ में आया, जब हम पढ़ाते तो एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट कर दिया था, वो उनको रेफर कर रहे हैं कि मिसवाक को जो है वो प्रोहिबिटेड, निषिद्ध द्रव्य माना है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड हर्ब एज फार एज दिस दंत पवन और इज कंसर्न। सो और वो भी तभी की बात है जब मिसवाक टूथपेस्ट आया था, तभी ये क्वेश्चन आया था वे बैक इन 25 और 28 years back. So how you decide that miswak herb preparation may be used as a dant pavan? That was question in my mind.
So overall, your presentation, Dr. Ashok Patil presentation and Dr. Manu Sharma presentation is up to the mark, and it is covering all the important informations regarding the oral health and hygiene. Thank you. Over to Sharma. Very nice, short and concise webinar today, sir. I would like to request Dr. Sudhakar Reddy, sir. Welcome, sir. Welcome for his valuable comments. Dr. Sudhakar Reddy ji from Mysore. Am I audible to you, sir? Sir, namaskar, sir. Namaskar. Good evening to all dignitaries, respected Pawan Kumar Sharma sir ji, Agni Hoti sir ji. Namaskar. Namaste, sir. Today's webinar is actually, it was very nice presentations regarding oral health, and almost they covered everything regarding Ayurveda. And there are some few things are there I would like to share. If the oral health, oral hygiene, or oral cavity is the entry of our system, GIT system. So if whatever we are taking food or etc. through oral cavity only. So the oral cavity, if it is healthy, definitely our gut will be healthy. If gut is healthy, the food, whatever we take, it will be getting digested. So that is the most important part of our body, oral cavity. To maintain that oral cavity in Ayurveda, there is a description of so many charyas, which are already covered by our all eminent speakers. And this Kavala, Gandusha, Dantadhavana, Jivanirlekana, whatever we do the procedures, apart from the increasing of the capillary circulation of oral cavity, there is one more thing. They stimulates the salivary glands. This salivary glands, which consists of the lysozyme enzyme, that is antibacterial. And this will definitely helps in reducing the unnecessary bacteria or unhealthy bacteria in the oral cavity, thus prevents the halitosis, bad smell coming from the oral cavity. That is one point. And regarding Dantadhavana Kashtas, Acharya is clearly mentioned, as Agni Utsars also mentioned, the Dantadhavana Kashta 12 angulas. See the Charakacharya's, Susacharya's logic behind it. Why it is 12 angulas? If you see our toothbrush, if modern toothbrush, average toothbrush, I asked my students to just measure it. It's around 17 to 19 centimeters. But our Acharya's 12 angulas is almost comes to 22 centimeters. See, logic behind 5,000 years back, our Acharyas mentioned that much of length is because we have to hold it and we have to give the pressure on the teeth. For this purpose, they have mentioned 12 angulas. The same thing the modern people, they adopted, might be because we need a pressure to do Dantadhavana. So these are all what I say means the Acharyas, whatever they mentioned, that is relevant in modern era also. That's what I want to say. And Kurcha, Dantakasta Kurcha also, he has mentioned that we have to make it by own our teeth. That's also soft brush nowadays, which is mentioned. And that if it is not available, you can go for with our hand also. So the hand, we can move anywhere in the oral cavity without causing any injury to the gums and other things also. That's also they nicely mentioned. That's why nowadays the soft brush idea came without hurting gums or other things also. And another one, they have mentioned that Madhura Katutikta Kashaya Rasas, and Susuta added Madhurasa. Katutikta Kashaya Rasa and Madhurasa, predominant kasta is needed for Dantadhavana. There also logic is there. Our oral cavity is a Kapha Prakopa, Kapha predominant. So the Kaphahara Rasa, that is Katutikta Kashaya. And Madhura also mentioned by Acharya Susrita. But now we can say that if see any toothpaste available in market, foam is coming. That foam is coming because of the Madhurasa in Ayurveda. So that means Acharya Susrita's adding Madhurasa is a genuine reason where we'll get some little foam. If you're not getting foam, the people will never like our toothpaste. And tooth powder, it is available in the market, Ayurvedic tooth powders. People did not like because they will not get any foam. If they get foam, they will be easy. That's why Acharya Susrita added Madhurasa.
Also among these rasas, tiktascha nimbaka. That means among the tiktarasa dravya kastha, the nimba is shrestha. So widely in rural area, people are using this nimba kasta as a dantadhavana kasta. And among the kadrasas, karanja. Among the kasharasa, kadira. And madhurasas, madhuko. So this is a principle only. So whichever available drugs which is predominant of this, also we can use. Here also the logic is there. Why they mention Kadatikta Kashaya predominant? See, for example, the Dinacharya of Dantadhavana can be modified in Vasant Rutu. Vasant Rutu, there is a Kapha Prakopa will be there physiologically. So we can use the tooth Dantadhavana Kashta, which is predominant of the Katurasa. That's it. That is why. So the according to season also, you can just change this Dantadhavana Kashta. This availability practically some may ask question. If you go on taking these kastas from the plant, so plants will not be there. Plants will be destroyed. And again, first people will come to us. That is why Acharya Susuta mentioned Danta Shodhana Churna. So the Danta Shodhana Churna is same like 11 ingredients. The 11 ingredients Danta Shodhana Churna, if you prepare it, there is no issue. And lastly, we can promote Ayurveda in promoting oral health by asking the people go for minimum of Ayurvedic toothpaste, whatever may be available market toothpaste. See, toothpaste, Ayurveda toothpaste. Now we are in Ayurveda. Like that way we can educate the people because kastas are not available. It is maybe practical problem. That's why you can go for Dantadhavana purpose. The available Ayurvedic toothpaste. So where we are applying Ayurvedic principle. That is my suggestion, sir. And regarding Jiva Nirlekana is also very, very important procedure to maintain oral health. But Jiva Nirlekana, Acharya has mentioned so many materials. But nowadays, the same thing in a different way, we are using the plastic one or other things also. Whatever Acharya has mentioned, same thing principle they have adopted. Otherwise, you can just have your own finger. That is very, very important. Acharya has mentioned. Again, the finger is very, very important because you can move it wherever you want without causing any problems. And there is one more black tila. The black tila, there is a practice is there. Tila, black tila, sir. That black tila, Krishna tila, it will be useful to give the strength to the gums. So that also can be added in the tooth powder. These two we can use, sir. And Kavala Gandusha already explained by Dr. Ashok Patil, sirji. And this Kavala Gandusha, it's not a big issue, sir. Okay, we can promote among the people, general people, Vishnodaka. Simple Vishnodaka, we can do Gandusha, Kavala after Dantadhavana and Jiva Nirlekana. That way we can promote it. If again they know and they can affordable, they can go for Triphala Kashaya with Madhu. Excellent procedure for Kavala Gandusha, which prevents all the Mukhadoshikas and the halitosis, after ulcer, and etc. In after ulcer, actually we tried in our Ayurveda college, that is Triphala Kashaya with Madhu. Excellent solution, sir. That is, we can use that as a mouthwash also. And use of all this thing in the night before bed, important. Acharya clearly mentioned that 2 times Dantadhavana. That is very, very important. And even some part of India, especially in Kerala, I can say, sir, every home, every person, even including children, 2 times they will do Dantadhavana. So that we have to promote among the people, 2 times minimum Dantadhavana. Use of anything also night before going to bed is very, very important. So the bacteria which is bad bacteria can be removed before going to sleep. So that's why 2 times Dantadhavana is very, very important to promote our oral health. Apart from these procedures like Kavala Gandusha, Jiva Nirlekana, Tambula Sevana, and etc., and taking fruits, the fruits also very, very important. Taking fruits also will maintain our oral health. And before that, one more thing I will say, our Acharya Bhavaprakash mentioned Usha Jalapana. The Usha Jalapana also definitely helps in maintaining the oral health. This is before Dantadhavana.
the Usha Jalapana, after getting from the Brahmamuta Utti state, after Karadarshana or Gritadarshana, Darpana Darshana, they mentioned Usha Jalapana. Just to take it one sip of water, rinse it and spit out, and remaining water can drink. That is Usha Jalapana. That Usha Jalapana also removes the unnecessary bacteria from our mouth. So this Usha Jalapana also is essential part. And having all the rasas, intake of Sarvarasa Abhyasa. The Sarvarasas, when you take, the tongue will get the Rasanendriya will get stimulation, so that there will be proper salivary juice. The salivary juice consists of the lysozyme enzyme, as I told. So all these things will helpful in promotion of the oral health. And especially in the diabetes mellitus, the people will complain of the what we can call halitosis. So these diabetes people, more care should be given to the oral health, especially this Triphala Kashaya with Madhu will be useful for them, sir. So these are my comments. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Agnihotra sir, and thank you, Pawan Kumar Sharma sir, and Vishnu sir also. Thank you very much, sir. Very nice and valuable comments, sir. Very nice and valuable comments. Very scientific, very scientific. Now I would like to, session is open. I would like to request Dr. Hema. Dr. Hema, would you like to add? Dr. Annapurni? Yes, welcome. Welcome, Sir, Doctor. nothing to be added, sir. Wonderful session, sir. Lot to learn, lot to good information, sir. I actually I try to get some or other thing where I can inculcate. And I told you, मेरे तो अभी बच्चे हैं, छोटा वाला तो है ही. तो आज के सेशन से भी मुझे बहुत बढ़िया एक टिप या आई कैन टेक सजेशन या हैबिट मिल गई है. मेरा छोटा बच्चे को अभी टीचिंग चल रही है सर. आई वांटेड टू स्टार्ट विथ ब्रशिंग. सो जैसे मुझे यष्टि मधु का बताया गया है, ऑब्वियसली मैं उसको जरूर ट्राई करूंगी. तो मेरे लिए तो हर सेशन इंफॉर्मेटिव रहता है सर, और मैं हर चीज को अपने लाइफ में पार्ट बना करके आयुर्वेद के साथ जीने की कोशिश कर रही हूँ. थैंक यू सो मच सर टुडे फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस great platform. Thank you, Hema ji. Great. New Namaste, sir. doctor It was is so informative. It was so informative, as Dr. Hema told many takeaway points for the kids. It's very nice, very practical approaches and practical, very easily that can be done at home, has been shared by many practitioners. Thank you so much, sir. It is a very informative platform. We are. Thank you so much. Thank you, Dr. Annapurni ji. And for Theatre Day, I would like to request to invite more speakers if you have interested in theatre. I also did my diploma in direction and editing along with acting from National Institute of Film and Fine Arts in 1985. So, sorry, 1995. In 1989, I did my MD. So I am interested if various speakers from different streams can also highlight our mythology on Theatre Day. Please invite. And if from all dignitaries of the dais and on the dais, if we know anyone, please recommend me by today so we can make the design. Now I would like to thank you, madam. Now I would like to request Dr. Geeta Sri Gogoi. She is new. May we request to unmute yourself, madam, and kindly introduce. Welcome to Ayush Samriddhi platform. Welcome. Thank you, sir. It was a very informative session where we could learn a lot of things and we could revise a lot of things that we learned in our UG days. Sir, the most important thing about dinacharya, if we follow the dinacharya in a proper way, we did not take actually medicines or other supplements actually. So it was a very informative session, sir. I'm from Assam. I joined it today. It is my first day today, but I'm looking forward to the further sessions. Thank you, sir. Welcome, madam. Welcome.
welcome. Dr. Vishnu Prasad Sharma ji is our guardian. Dr. O.P. Gupta ji, Dr. R.K. Sharma is my class, 1 year junior, younger brother. So we all are from one family. Ayurveda is real example of Vasudhaiva Kutumbakam. So I would like to request now Dr. Dinesh Das ji, if you would like to add anything. दिनेश कुमार दास जी कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद फिर जगदीश्वर जी और फिर अग्निहोत्री जी. I hope Dr. Dinesh Das ji is not connected. सर प्रणाम सर. हरिओम. सर प्रणाम. हरिओम. प्रणाम सर. प्लीज टेल मी कैसे आप लेट ज्वाइन हुए आज? हाँ सर, अभी तो हम एक काम कर रहे हैं सर, बाद में हम बात करेंगे सर. हेलो. ओके ओके. हाँ मिला जी. थैंक यू. तो जगदीश्वर जी प्रणाम. नमस्कार. नमस्कार सर. सब तो मेंटेनेंस के लिए काफी बताए हैं, थेरेपेटिकली and scientifically, but one my reference will be some in Islamic text. It is said that कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में नहीं आना. Then, if you go generally, all the dinners and felicitations, we find that the raw onion is cut and put in dishes. I do not know how it is palatable and how it is helpful to the people. Actually, strictly speaking, this onion and garlic, they come under tamasika ahara. And tamasika ahara, even in comparison also, these two are worse than the meat, what my good Deva said. That is why it is forbidden for our section. And at the same time, in dinners, I do find very regularly and frequently in all modern age, it has become a fashion of putting cut onion aside of their dishes. Exactly speaking, there is such reference in them. कि अगर कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में आए तो हयात भी नहीं कर सकते. When there is such practice, why do they not? People are conscious in this other section of people. I don't, because I do not refer and compare in religious way. But if my presentation will go, it will more depend on the dietary system. If anything, healthcare also, it depends on dietary system. If this attention is not given, then what actually strictly speaking, usually I find that much non-vegetarian eaters, I find a kind of bad odor come from their mouth. Of course, they may not be accustomed to observe, and people of that that group may just manage. But I do feel very sensitive, and at the same time, if vegetarian is concerned, should I distinguish this? That is it not a vegetarian food, onion and garlic? If both are eaten raw, practicing is such an educated section that I do not know through which media these people are learning. कच्चा लहसुन खाने से दिल की बीमारियां नहीं आती, दिल की बीमारियां नहीं. तो वो तो कच्चा लहसुन खा करके तो गंदा फैला जाती है. अगर बात करें तो मैं बोलता हूँ कि ओरल माउथ एक ही शुभ्रता से रखे तो ये दोनों होता है. कभी कभी हम बोलते हैं अरे मुंह ठीक से रखो ना, माने वो दो अर्थ से माना जाता है, ये खाने का और दूसरा बोलने का. उस तरीके से अगर देखा जाए
in that perspective, we should give much attention to the diet also, not for external observation. And one more thing, if at all any baby is being rinsed with brush in front of me by the mother, or they look after people, then immediately I ask them, stop using brush. Use powder with the finger. Why? Actually, using this brush, if keenly observed, and it is general also, their gums will be going on cut. When the gums are cut, even in poetry, if any lady, her beauty is explained in a poetry way, in Telugu, usually there are so many poetries that the people sing the glory of the beauty of the lady by the gum like archery gum. If this brush is used, where is the question of arch gum? If strictly I will be judging capacity in concluding the natural beauty of a either national beauty or world beauty like that, I do not go for asking that the measurements of their body. Simply ask them, please smile, my dear girl, please smile. With that only we can say that it gets no marks at all. Because the beauty, it can be expressed by only smiling and the facial. Likely, of course, it is not the subject of this reference of beauty, but whereas the poetry of the concerned, they were mentioning about the gums as arteries and the teeth as moti jaisa दान, मोतियां चमकते जैसा दान. और आज ब्रश में करते हैं कि एनामेल उखड़ जाए, उतना तक. ऐसा तो आज की जो प्रैक्टिसेस में हम बोलते हैं ब्रश करने की तरीका कितने लोग जानते हैं, I do not know. कि अप एंड डाउन करना ही है, लेकिन एकदम लैटरल वे में ना धस करके घिसने का एक रॉन्ग प्रैक्टिस है. And one more thing, if people suffer from constipation, usually they get bad odor, and it is very necessary to keep that means vowels clear. And in course of time also, when these practices are going on, paste presentation in the market, I say that pastes were in those days fluoride paste and so many pastes like that. But today's fashion has become that your paste is containing आपका paste जो है ना कोयला के साथ है, नमक के साथ है, तो मुझे हंसी आता है, क्योंकि ये लोगों का आज साल्ट एंड कोयला मिले तो पेस्ट का स्पेशलिटी आया. तो वो लोग पुराने जमाने से जो कोयला से दंत धावन करते थे, या वो काऊ डंग का जो एशेस बनने के बाद उसको जलाने के बाद उस राख से जो दंत धावन करने के लिए बनाते थे, मंजन बनाते थे, कि एक्चुअली जो है ना वर दे फूल्स. Today, these people genuinely making introduction of coal and salt and making money of different brands. Since that, likely, which is going on, and for this brushing system, and it has clarified. And the thing, cleansing the tongue, where cleansing or rinsing the tongue, usually, I do not know in children especially, क्योंकि थोड़ा तो वो लोगों के कफ प्रकृति होते. मेरा खुद नवासा को मेरी बेटी बताते, पिताजी आप ठीक से निकालते हैं, इनका गला साफ कीजिए, आप गला साफ कीजिए. Why don't you? I ask that, why don't you learn? अगर मैं साफ करना शुरू करा, मेरा नवासा खुद बोलता है, पिताजी तातయ్య నువ్వు వద్దు అమ్మ కావాలి, तेलुगु में बोलता है, नाना माँ चाहिए. माने वो लड़का डरता है, क्योंकि मैं एकदम मेरा उंगली अंदर गले तक निकाल करके उसका बलगम निकालता हूँ. और अगर आज की दुनिया में देखे, कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी में गला खोलकर उंगली डालकर अगर करते रहे,
कि this gentleman may be uncivilized, uncultured. ये था practice, but whereas Ayurvedic system keeps like that. तो अंदर का गला तक साफ करने के लिए कोशिश करे तो वहां पर ठीक से डाइजेशन रहे तो अच्छा है. अगर खाए सो हाजमा नहीं होता है तो वो भी बाहर आएगा. तो ये जो प्रैक्टिस है, these are the fundamentals in Ayurveda and they are mixed with our culture. And right from we need not teach them do like this and do like that. And as far as the forestation and supply in the market is concerned, the sticks and all those things. तो वो जो है ना आम अवेलेबिलिटी में नीम का मिलता है. मैं तो थोड़ा सा दुखी होता हूँ क्योंकि मैं जब जब नॉर्थ में जाता हूँ नीम की लकड़ी काट करके वो बिका जाता है, लेकिन साउथ में जो है ना नीम की लकड़ी कहीं बेचा हुआ नहीं जाता. कहीं तोड़ने के लिए तो शहर में खरीब में रहता भी नहीं है, और तोड़ने जाएंगे वो ये थोड़ा सा दिक्कत आते हैं. तो जितने भी चाहे नीम का हो, करंज का हो, अपमार्गा का हो, ये सब का जितने भी अवेलेबिलिटी है कि लोगों की नॉलेज में ये बेटर देन पेस करके बता सकते हैं. एंड मोर ओवर वन अमंग्स द एक्चुअली देयर इज द रेफरेंस हमारे यहाँ पर चर्या करके किताब में है. तो उसमें एकदम अगर आप लोग ब्रश इस्तेमाल करें, पेस्ट इस्तेमाल करें, उस टाइम का क्या डिफरेंट पेसेस आई डू नॉट नो. इन 1955 my Gurudeva said that you should use only neem paste. At that time there was only one company, I think it is from Bombay side or Kolkata side, neem paste I am having. Right from 1971 I am using that paste only. Now I am seeing the brand of the paste also, neem paste. That only. And after that, many more people started introducing the disease. Neem paste was only the first brand that since then I am using this brand only. Whatever it may be, need not to brand popularization of in our discussion. But the thing is this, how essential was neem and why Anandamurti ji stressed to go for neem only, not other paste of that time. Likely everything in our culture and blood and everything, Ayurvedic practice is there, but only the thing is required that just inculcate and just keep them rise in their sense. That much is required. With this, I conclude my presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Very nice talk. Very nice talk, sir. Impressive and inspiring. Now I would like to request Professor Dr. V.K. Agnihotri, sir, for his concluding remarks. Welcome, sir. Welcome, sir. आपकी आवाज धीमी आ रही है सर. Sorry. अब आ जाएगी. Thank you. My regards to Dr. V.P. Sharma Sahab, Doma ji, and our Professor Reddy ji, and all the guest speakers. You made today's oral health hygiene webinar successful, and so all the distinguished speakers also made this occasion successful. If this all information is which is taught in all the Ayurvedic colleges, if it is conveyed properly to our common mass with the awareness, I do hope that not only the oral hygiene of each and every individual of population will be better, but also their digestion will be better, so will be the better of their health. So as we are going far from Ayurveda, we are also going far from the health. So the basic principles of Ayurveda, especially our charyas, Dincharya, which also automatically includes our oral hygiene efforts and all the devices which are advised, if followed properly as per our text, as per the teachings, it will go a long way for the maintenance of oral health. My father was always, he never used any this daton, only nimba daton.
which is available in our North India very well, and he kept his venture up to the end very good. So it is an information that we can do better if we will be attached with our nature and with our natural things. So this much is our words for today's webinar. And as I informed you, I have to go with my family. Just I was waiting. My daughter is here, and she just changed her say profession from TCS to Citibank. So she is very much interested to give me a good party in Radisson. So we are all waiting when this will be come to an end. So we are leaving, and thank you everyone. And our All the best, guest. all the best. Congratulations, Thank sir. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. And this Okay, is thank our you. first Good night. webinar after 300 webinar, which is completed before time. Within time or before time. Yes. So Welcome. it's your great efforts. Timekeeping is a must in webinar and in life both. Thank you so much. Thank you. Thank you.